friends, welcome back to the channel. Merry Christmas and Happy New Year. Every year during this time, Atul and I generally plan for a trip. Either it's a long trip or a short trip, but we do plan a trip every year. So in 2016 we went for run ride. 2017 it was kind of just 5-6 days ride where we did entire North Karnataka. And this time हम लोगों ने सोचा है कि we will go up north to Amritsar. We will let you know about where we are going on our subsequent videos. Most of the time on our videos or on my blogs, we get a lot of question about how we pack our bags for such long rides, like 12 days, 13 days or 20 days, 1 month. How do we pack our bags? We thought it is a good opportunity because we have already done a bit of we have removed all our clothes, all our things that we will be carrying for this ride, निकाल के रख दिया है. So हम लोगों ने सोचा है कि whatever we stuff inside our saddle bag, tank bag and top case, and we thought that we would create a quick video about it. तो बेसिकली यहाँ पे हमने अपना सारा सामान फैला के रखा हुआ है. एंड अतुल विल टेल यू स्पेसिफिकली कि कौन सा बैग क्या है. आई विल जस्ट लेट यू नो कि 12-13 दिन के लिए हम लोग क्या क्या पैक करके जा रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स विल गो इनटू देयर रिस्पेक्टिव बैग्स, लेकिन मैं जस्ट आई गिव यू अ क्विक ग्लैंस ऑफ व्हाट वी आर टेकिंग. So these are our sleeping bag. Oh, by the way, in this ride we are attending one of our friends' marriage. I guess you guys know the Duke 390 guy, Amrutesh. So we have to attend his marriage in Udupi. So we are carrying some अच्छा शादी वाला कपड़ा. So we have that here. Sleeping bag के बारे में बता दिया है. We have our medical kit. These are snacks that we will have on our way अगर कुछ खाने को नहीं मिले और बहुत भूख लग रही है तो. Then we have puncture kit here. Then I have stuffed all my clothes inside this poly bag. Though our saddle bags are completely waterproof, just in case के लिए polythene में लगा दिया है. So for 13 days I am carrying almost close to 6 t-shirts, 2 spare jeans, 1 slip-on and 1 extra shoe. And we have winter gloves as well because up north पता चला है कि बहुत ठंडा है. The temperature might drop to 1-2 degrees, 6 degree, 4 degree, पता नहीं. So to be on the safer side we have taken warm gloves. Then rain gear, 1 extra backpack. Similarly Atul's clothes, so he has taken around 4-5 extra t-shirt, 1 or 2 extra jeans and extra shoes. chain loop और side stand, वो portable stand. Okay. And then these are the tool kit. पैसा. And obviously we are not taking those soft toys. And these are some toiletries and utility stuff. That's it. बाकी कुछ छोटे मोटे इधर उधर के सामान हैं. So now we will pack everything inside bags में. तो एक एक करके हम लोग बताते हैं कि किसमें क्या जा रहा है. And most important, my camera kit. For all our rides or trips, we carry the camera kit out here in this tank bag. तो अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन से बैग हैं. एंड सो दैट वी नेम ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड सबका अच्छे से नाम आपको बता दे. आई थिंक अतुल विल डू द जस्टिस. सो अतुल आपको बता देंगे कि हमारे पास कौन कौन से बैग हैं. तो सैडल बैग के लिए वी यूज डर्ट साइड फ्रॉगमैन. सो दीज आर लाइक 100% वाटरप्रूफ सैडल बैग. सो हम लोग इसको करीब मोर देन 4 years यूज कर रहे हैं. एंड we have done like n number of rain rides. आज तक not even single drop of water has gone inside. भागलपुर में तो पूरा बाइक गिर गया था. ये डूब गया था पानी के नीचे, फिर भी कुछ नहीं हुआ. So that way it's like completely value for money. So whatever you are seeing here, I'll be putting the links in the description box below, so you can buy it from there. Coming to the saddle bags, so these are the dirt side Frogman saddle bags. So it comes with this is the harness. Under this
you get this yellow color what you call PVC bag which is completely waterproof. तो इसके अंदर हम लोग सारा कंटेंट स्टफ करके and we'll just load it on the bike. So apart from that we have this Rhinox tank bag. So actually this is my second Rhinox tank bag because I had the previous bag that lasted for about 5 years or so. Rhinox, very good quality. So it lasted for about 5 years. उसके बाद इधर उधर स्टिच चला गया था, जिप काम नहीं कर रहा था and all that. इतना उसको refuse किया इसीलिए. So this is our second set and we love this bag, totally worth it. And this is where my camera kit goes. So again, links in the description. So we'll show you what all camera gear we carry. So apart from this, earlier we were using Vyaterra Raptor tail bag. So it was very good bag. Again, not waterproof, but then expandable, very solid build quality. Last Northeast ride में we had to always सुबह उठो, load करो, bag load करो, bungee cord ऊपर नीचे करके, फिर शाम में होटल पहुंचो, unload करो, सुबह load करो. हाँ, it was a big hectic. So थोड़ा पैसा save up करके we thought of buying a top case. So now that we purchased the Hepco Baker Explorer top case. So it's an aluminium top case, so very sturdy, very good build quality. Again, links in the description. So इसके अंदर mostly we'll be carrying the lightweight stuff like sleeping bag and छोटा मोटा toolkit वगैरह etc. क्योंकि it has a capacity of 5 kgs, I guess, right? It's not 5 kg apart from the weight of this tank. Yeah, correct. चलो loading start करते हैं. So एक में जाएगा अतुल का सामान, दूसरे में जाएगा मेरा सामान, and this will have all our clothes, shoes and any other basic item. शुरू करते हैं. So दोनों saddle bag almost completed है, almost 90%. छोटा मोटा एक दो सामान है, उसको हम लोग बाद में डाल देंगे. So now after this we are working on the top case. So हम लोगों ने अपने शादी वाले कपड़े इस बैग में डाल दिए हैं. So this goes here. Apart from this sleeping bag. Top case is fully loaded. So this is done. पैसा तब से बेड पे ही पड़ा हुआ है, बोल रहा है मेरी कोई इज्जत ही नहीं है. चलो इसको कहीं अच्छी तरीके से रख देते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट है. I know. By the way, हम लोगों ने टैंक बैग में भी सामान रख दिया है. तो अतुल, if you could tell कि क्या क्या रखा हुआ है apart from my camera and all the charging item. सारा सामान लोडेड है, कुछ पैक्ड है. So टैंक बैग जो what we have Optimus. First of all एक GoPro selfie stick. So this is a bag जहाँ पे basically cables, power banks etc. वो सब रहते हैं. फिर एक और छोटा पाउच जिसमें GoPro के बैटरीज एंड माउंट्स, मेमोरी कार्ड्स etc. मैं एक्चुअली नाइट गॉगल्स है. एक्चुअली ये काफ़ी हेल्प करता है. एंटी ग्लेयर, समथिंग दैट यू गेट डेकाथलॉन में. सो ये हो गया. फिर ये मेरे सनग्लासेस, सनग्लासेस. सो इसमें चार्जर है, बेसिकली चार्जर और ट्रांसफर केबल है. सो वी हैव 3 lenses, 2 DSLRs. So firstly we have Nikon D5200. This is like a crop sensor camera. इसके साथ wide angle lens है, Tokina 11-16. So for wide shots, for zoom shots we have this full frame Nikon D750. Very good camera. इसके साथ Nikon का ही lens 7300. And sometimes night shots के लिए we use this Nikon का Nifty 50mm. Very good lens, f1.8 superb lens. ओह हाँ. ये कैसे बोल सकते हैं. So ये Instax Mini actually instant photo के लिए है. Polaroid camera. Polaroid camera. So let's see. अभी तक तो बस कितना 3 ही शॉट लिए हैं, 7 शॉट बचा है इसमें. नहीं एक तो 10 रिफिल और एक खत्म हो गया है. हाँ, तो ये भी है. So these are the things. So इसको भी वापस पैक कर देता हूँ मैं. या एंड आई वाज सेइंग कि हम लोग कभी कभी वीडियोस मेरे iPhone 8 Plus एंड अतुल के LG G6 में भी लेते हैं अपार्ट फ्रॉम द GoPro.
ये तो Amazon से कोई लैपटॉप स्लीव लिया था. What I use is White लैपटॉप स्लीव, very good quality foam, अच्छा खासा foam है both sides. इसके अंदर अतुल का लैपटॉप जाएगा. And इसमें लैपटॉप एंड ये तो चार्जर है शायद. Yeah. Finally, our packing is almost done. Only few here and there, छोटा मोटा एकदम कुछ रह गया है, which we will do tomorrow early morning. So another question that we keep getting most of the time is about our riding gears. So people keep asking us what do we wear when we go for rides. So I wear a Dainese riding pant along with a Dainese riding jacket. For gloves I use TBG Street gloves. These are not full gauntlets. These stays till your wrist. And I wear a Dainese boot. अभी रिसेंटली मैंने अपने बूट्स और पैंट्स के परचेज के ऊपर एक वीडियो बनाया था, सो यू कैन चेक इट आउट हियर. द एग्जैक्ट नेम ऑफ ईच ऑफ दीज गियर्स आर हियर. And Atul will let you know about what are the riding gears that he wears. So I'll start off with these gloves. These are Joe Rocket Flexium TX gloves. नंतर जब US गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी. तो boots I wear these Alpine Star Corozal Tri-Star boots. So these are waterproof, not Gore-Tex but waterproof. So this also she got from US. So really good boots. These come in the adventure category. So that's why you can see these kind of buckles. Very tough boots. For riding pants, I'm using these. Earlier it used to get called Spartan. Now it is Aspida ODCS riding pants. So इसको around 4 साल हो गए. So पूरा पैसा वसूल किया हुआ है आपने. बहुत यूज किया है. Still going strong. Apart from this, I have an Alpine Star. I think TGPRA कुछ भी जो भी. It will come on the screen. The exact name. So very good riding jacket. I use my riding jacket every day in city, on the highway. Like I don't have like city में नहीं पहनना है, वहाँ पे पहनना है. I wear my riding gear all the time. इसका भी पूरा पैसा वसूल किया गया है. So these are our riding gears. So finally we are done with our packing and the time is almost 9 PM. जल्दी सोना है because we are thinking to start the ride at around 5 in the morning. थोड़ा थक गए हैं बहुत ज़्यादा, like almost 1.5 घंटा 2 घंटा से we are doing this packing thing. कुछ खाया भी नहीं है. We will order something and I got these plum cakes from office. तो इसको अभी थोड़ा खाएंगे. So guys, I hope the video was useful and you had an idea about how we pack our luggage when we go for rides, about our riding gear. We will keep you posted about our 13 days ride which is starting tomorrow, and our first destination tomorrow is Udupi. See you around.